Hello guys, welcome to part 4 of our episode How Forces Affect Motion. Today we will find force from a graph. अब तक हमने फोर्स को एक्सपेरिमेंट्स और इक्वेशंस के थ्रू इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन क्या हम ग्राफ देखकर भी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लो एक स्पोर्ट्स कार 15 सेकंड्स तक मूव करती है। हमारे पास उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। Graph is divided into 3 regions. From 0 to 5 seconds, velocity increases. From 0 to 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, और अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो नेट फोर्स भी नॉन जीरो होगा। इन द रीजन 2 दैट इज फ्रॉम 5 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड्स। अब ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो गया है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, तो एक्सेलरेशन इज जीरो एग्जैक्टली, और बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F is equal to ma. Zero acceleration means net force is zero. And in the region 3, that is from 10 seconds to 15 seconds, graph slope is downward. Velocity decrease हो रही है. So acceleration negative direction में है. And therefore net force भी motion के opposite direction में act करेगा. So car slows down. From 0 to 5 seconds, car speeds up and there is a velocity change from 0 to 10 meter per second. So there is a positive acceleration. So we will find the net forward force. From 10 seconds to 15 seconds, car slows down. That is negative acceleration. So net force is in the backward direction. And we know that acceleration is given by the slope of the Vt graph, and by Newton's second law of motion F is equal to ma. So acceleration is equal to change in velocity by change in time. First 5 seconds में velocity 0 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. Step 1, we will find the positive acceleration. Acceleration is given by the change in velocity upon change in time, that is 10 meter per second minus 0 meter per second upon 5 second minus 0 second. So acceleration comes out to be 2 meter per second square. And by Newton's second law of motion, we know that F is equal to ma, where m is the mass of the car, that is 1500 kg, into acceleration, that is 2 meter per second square. So net force is 3000 Newton, but in this direction. So first interval में net force है 3000 Newton. In the second interval, we see that car moves with constant velocity, so there is zero acceleration. 5 second to 10 second के interval में net force zero होगी, because by Newton's second law of motion F is equal to ma, but acceleration is zero, that is the net force comes out to be zero. In the third interval, that is from 10 seconds to 15 seconds, car slows down, so there is a negative acceleration. So we will find the net force by calculating the negative acceleration, that comes out to be 0 meter per second minus 10 meter per second upon the time, that is 15 second minus 10 second, and the acceleration comes out to be minus 2 meter per second square. So net force is F is equal to ma, that is 1500 kg into minus 2 meter per second square, that is 3000 Newton in the negative direction, that is 3000 Newton in the west direction. अब पिक्चर क्लियर है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने हमें बताया कि नेट फोर्स जीरो हो तो वेलोसिटी चेंज नहीं करती. न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है F इज इक्वल टू ma, नेट फोर्स कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी. लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है. A toy car of mass 100 gram is moving with a constant velocity of 0.5 meter per second. What is the net force acting on the toy car? So we have mass is equal to 100 gram, that is 0.1 kg, and velocity is 0.5 meter per second. Velocity is constant. So constant velocity means इसकी acceleration zero है. By Newton's second law of motion, we know that F is equal to ma. अब acceleration zero होगी तो नेट फोर्स भी 0 न्यूटन होगी. कार मूव कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर नेट फोर्स जरूरी एक्ट करता है. यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी जीरो होगी. सो
Let's move to the next question, that is, two children of different masses are sitting on identical swings to impart identical initial acceleration. For which child would you require to apply a larger force and explain why? So, दो children जो कि identical swings पर है, उनका mass different है. So, we will know that a child with greater mass will acquire a larger force. क्यों? Because according to Newton's second law of motion, हम जानते हैं कि F is equal to ma, that is force is directly proportional to mass. And जब acceleration same है, तो F directly proportional to m है. So, it will depend on the mass. So, if acceleration is kept the same, the child with the greater mass will require a larger force. सेम एक्सेलरेशन चाहिए बट मास डिफरेंट है तो हैवियर चाइल्ड को एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा. फिजिक्स का सिंपल रूल, सेम एक्सेलरेशन प्लस मोर मास is equal to more force. A sudden collision causes a large change in velocity in a very short time, producing a large acceleration and therefore a larger force. Bubble wrap या हे cushioning provide करते हैं, so the stopping time increases. Bubble wrap or hay increases the time taken by the glass item to come to rest during an impact. This reduces the acceleration and hence the force acting on the glass, protecting it from damage. Imagine a glass object suddenly floor से टकराता है. उसकी velocity almost instantly zero हो जाती है. That is huge change in a very short time. What will be the result? The result will be a very large force. लेकिन अगर हम उसके अराउंड बबल रैप लगा देते हैं तो बबल रैप इम्पैक्ट को कुशन करता है और स्टॉपिंग टाइम इंक्रीज करता है. सेम चेंज इन वेलोसिटी बट मोर टाइम में, इसलिए एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों रिड्यूस हो जाते हैं. सो बबल रैप डजंट मेक द ग्लास स्ट्रॉन्गर, इट मेक्स द स्टॉपिंग प्रोसेस जेंटलर.